बियर पे बातचीत मैनस इन द मॉन्क प्रेजेंट्स बियर पे बातचीत। मानस तेरा बियर का है? बियर इधर है। सो चियर्स ब्रो। cheers. Hey everyone, नमस्कार एंड हमारी नई पेशकश पे आपका स्वागत है जिसका नाम है बियर पे बातचीत। एंड बियर बियर पे बातचीत का इंटायर पॉइंट ये है कि वी डिस्कस थिंग्स विच वी प्रॉब्ली वुडेंट व्हेन इट्स लिवरपूल रिलेटेड बट फुटबॉल रिलेटेड शायद से मोस्टली वी आर नॉट सेटिंग एनी बाउंड्रीज सो फार बट नॉट ये नॉट हम दैट तो वी आर इनफॉर्मल नॉट दैट वी आर गुड एट इट। या हम तो इनफॉर्मली बात करते हैं यूजुअली बट हम लोग थोड़ा सोचा डोमेन बढ़ाते हैं एक दो सिप लेते हैं थोड़ा मजा ज्यादा आएगा। चीयर्स दीदी। और ये मजा जो है ये मैं पूरे लिवरपूल फैन बेस को देना चाहता हूँ। सो हाँ जी, इंडी कॉप इज एक्सपेक्टिंग हर टू शी हैज जस्ट रीट्वीटेड so let's see. Shared it. निधि into the quarter final मेरे भाई। Such a big thing, right? I think this is Jurgen Klopp's. I read a stat that this is his in his um, something like only once we have missed. I think, and that was his first season where we've missed the first full season is when we've missed the Champions League quarterfinals. So yeah, hi Rahul, hi Rashid. मेरे को कमेंट नहीं दिख रहे ब्रो जो तू हाय बोल रहा है। साइड में है. So this is Rashid. Rashid is saying hi. Hi Rashid, how are you doing, brother? हाँ जी। सो टू द पीपल हु हैव जॉइंड, वापस जस्ट रीइटरेट कर रहे हैं हम कि दिस इज बियर पे बातचीत। वी वांट टू डू दिस मोर ऑफन। वी वांट टू टॉक अबाउट everything football related. It could be Barcelona, it could be Arsenal, it could be anything. But इस बार फर्स्ट Yeah. एपिसोड है, हम शुरू कर रहे हैं लिवरपूल से ऑफ कोर्स बिकॉज हम लोग लिवरपूल बेस्ड चैनल है एंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। लास्ट 5 साल में निधि 4 बार हम लोग क्वार्टर फाइनल पहुंचे यूएफए चैंपियंस लीग में। वही स्टार्ट में ढूंढ रहा था. And Nitika is here. Hi Nitika. Hi, how are you? हाय I'm नितिका। good. How are you? नितिका Hi. व्हाट्सअप, कैसे लगा कल का परफॉर्मेंस लिवरपूल का? बाय द वे चीयर्स है नितिका, हम बियर पी रहे हैं। दिस इज बियर पे बातचीत है। Yeah. Okay. Cheers. Cheers, guys. Yeah. Cheers. नहीं, Nitika का वीडियो I was watching. So Nitika का वीडियो starts with uh, if you think Inter was robbed against Liverpool, ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा. So I just watched her video आज शाम में. No, but that's true. Let's start with that actually. Yeah. Nitika, why do you feel people feel that they were robbed or something? I think we played well. We were just unlucky with the finish a little bit. Hi Johar. Why do you think That's what people I think that feel. we were lucky? See, I'll tell you something. A lot of this depends upon like how a team is performing then. They don't see Yeah, what it took for a team to reach there, to reach at that level that you become the clear favorites to win. There's a team you're talking about, that's Inter Milan. They have won the league. They are in such a good position right now. They might win the league again, but you're comparing them with the team that might not even win the league, Premier League mein, and you are saying yeah, that we are the ones who are like not the underdogs. They are the underdogs right now. How is it possible? Matlab, how is the narrative that is said that way? So it's the people who have thought that Liverpool is invincible. We never said that. If they thought that we are invincible and the performance put up there did not show that in terms of number of goals scored, so they thought that it's Inter Milan that is clear favorite to win. Means it doesn't work that way. We weren't that bad as well. If they were so good, they should have won it clearly. How did we rob them with the goals? Did we like take the ball away from their feet and not let them score, or kya humne? We didn't do anything. So how is that narrative set? So I just don't understand that. So which is why I feel that people go with that thing a lot, that thinking a lot कि यार नहीं ये टीम अंडरडॉग है इसको जीतना चाहिए था just because we did not score first. But कितनी बार वुडवर्क पे मारा है, कितनी बार पोस्ट पे मारा है यार. मतलब हमारा भी बैड लक हो सकता है किसी दिन. That's what it was. yeah. या बट First आई of all, टोटली एग्री विद Parmesh. नितिका। क्या बोल रहे हैं निधि?
नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन हियर. Parmeshwar is the guy who did the Inter preview with us. He's an Inter Milan fan, so thank you so much, man, for joining. I think Inter were really good, gave us a really really good fight, and obviously you beat us at Anfield, so that's a big thing. I mean, it's after a year, so yeah, I mean Inter were, I think they were pretty good. Yes, Manas, तू कुछ बोल रहा था? अ, देख मैं ये एक बात सोच रहा था कल. अबे देख ये पार्ट एंड पार्सल है. अगर बरेला रहता ना आपके पास दोनों लेग में, तो ये हाँ हाँ हाँ. शायद से जीत भी जाते हैं. मतलब बट वो इफ्स एंड बट्स पे मैं नहीं जाना चाहता, बट मेरे को ऐसा लगा, सी वी डिजर्व्ड इट ओवर द टू लेग्स. सो दे वर नॉट रॉब्ड, बट मेरे हिसाब से वी डिड प्ले वेल इन बोथ द गेम्स. लाइक इवन फर्स्ट लेग में, मतलब फर्स्ट हाफ तो was 50-50 you could say, but then they had a really good spell. We managed to sneak those two goals in. We played okay. एनफील्ड पे भी पहला लेग में, आई मीन सॉरी फर्स्ट हाफ में हम लोग, we didn't press well, we were not impressive. The only time we started to create those chances because Inter Milan realized कि भाई अपने पास 45 minutes है to have a shot, a go at it. वो थोड़ा aggressive हुए, और स्पेस मिला एंड वी स्टार्टेड टू क्रिएट दोस चांसेस. सो आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो रिजल्ट आया ना कल, क्लॉप भी ये बोल रहा था कि ये लॉस एकदम परफेक्ट गेम में आया है हमारे लिए. लाइक वी कुड हैव टेकन दिस लॉस ये स्टेज. मतलब अभी निधि, इफ यू रिमेम्बर हम लोग बात कर रहे थे हमको कितनी गेम जीतनी पड़ेंगे टिल द एंड ऑफ द सीजन टू विन अ ट्रॉफी और टू और इवन वो थ्री. We have lost that game. Hopefully now we don't lose a game. You know, we've lost a game at a Yeah. very good time. Yeah, we've lost a game at a very good time. But मेरे को लगता है क्लॉप काफी अंदर ही अंदर बोल रहा होगा प्लेयर्स को, भाई लोग कि क्या चल क्या रहा है. चेल्सी के अगेंस्ट भी we didn't score. वेस्ट हैम के अगेंस्ट also Lanzini had a great chance. They were okay. We could have drawn that game. कल भी we were not clinical. So I think बच गए. But let's move on, man. Nitika, obviously, we cannot win every game that we play. अभी इसके बाद there are 19 games to play. So do you think it was good कि एक loss जो If था we win, system? if we win the quarter final and the FA Cup quarter final, that is maximum 19 games. Huh? Yeah. If मतलब sorry, so ये जो loss था, एक system में एक loss था. Are you happy कि ये अभी निकल गया? This loss is out of the system, or do you think there are more stumbles ahead? I'm so happy with that loss, to be honest. मतलब couldn't have asked for the better timing. क्योंकि क्या है ना, sometimes that happens, you need it. Because अगर you notice in the game, I spoke about it in my video as well. वैन डाइक गोल करने की कोशिश कर रहा है कॉर्नर से, नहीं हुआ, स्माइलिंग, हाँ. कोई बात नहीं यार, फिर देख लेंगे. मतलब व्हेन वी आर इन दैट एटीट्यूड ना, दैट इज व्हेन वी नो दैट नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला. बिकॉज यू नो व्हेन लिवरपूल प्लेज एंड वी आर इन दैट इंटेंसिटी, दैट हाई प्रेस, दैट हाई लाइन, that happens when everybody is in that same mood. It's just that everybody came at that point of time just to think that that they are going to do it, they're going to win it. So that's what I think, that they came in that mindset that हाँ ये तो गेम हमारा ही है, इंटर नहीं इतना चैलेंज करने वाला, हो सकता है we took it lightly or something like that. So that is why I feel that this is a very right time to get that loss, because like you mentioned that Carabao Cup में हमने गोल नहीं किया, वेस्ट हैम के अगेंस्ट गोल बहुत जिस तरीके से आया, दैट वाजंट गुड इनफ फॉर अस. शायद ज्यादा कर सकते थे, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि दैट्स चेल्सी यू आर टॉकिंग अबाउट. दे आर वेरी गुड टीम. देन दैट्स वेस्ट हैम यू आर टॉकिंग अबाउट. वेस्ट हैम ने इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी सबको हराया है. तो इफ यू आर थिंकिंग दैट दैट शुड हैव बीन एन ईजी रिजल्ट, नहीं हो सकता. एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटर मिलान. What did you expect? Inter Milan के अगेंस्ट 7-2 टाइप्स ऑफ स्कोर लाइन चाहिए था. No, नहीं पॉसिबल यार. 2-0 लीड एट देयर होम ग्राउंड इज अ गुड इनफ विन फॉर अस. तो अभी people have started to expect so much from the team. They don't realize the kind of opponent that they are facing. We are not invincible. There are going to be downfalls. We had a okay game. Obviously, we didn't score the goals that we should have. But then I think that's how teams play, right? You can't be like performing in each and every game till the end. तब तो हमारे पास definitely quadruple होना चाहिए.
if you expect that kind of level from it, Liverpool. दीदी जो कमेंट्स आ रहे हैं वो एक एक दिखाते जा, if because public हाँ will feel. हाँ नहीं बट एंड दीदी आई वांटेड टू आस्क यू बिकॉज मैं पोस्ट गेम प्रेजेंट कर रहा था और फिर मैंने तेरा ट्वीट बाद में देखा कि मेल्ट डाउन हो रहा था ट्विटर पे। मैंने देखा नहीं बिकॉज स्पेशली मैच के बाद अब जब भी हम लोग हारते हैं मैं तो ट्विटर देखता नहीं हूँ बिकॉज बहुत ही लोग नेगेटिव हो जाते हैं। बट मैंने देखा नहीं था, बट पब्लिक क्या बोल रही थी? yeah, so I read one word lucky a lot. Lucky, and that was a common theme. The second thing that I noticed was, this is not good enough, and Klopp should have a word. These are the things basically that we heard, that Virgil is too casual and this and that. यार एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि yesterday's game, apart from the fact that we hit the post 4 times, and all those things happened, uh, players बहुत tired लग रहे थे यार. There were players who were very very tired. Salah was definitely looking very extremely tired. Van Dijk was looking tired. Fabinho was jaded. तो आई थिंक वो पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है कि दिस इज अ टीम दैट इज गोइंग ऑन अ रन. एफकॉन के बाद, एफकॉन में भी वेंट ऑन दैट रन, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो वी हैव वन ऑल द गेम्स. देर आर नो टीम्स दैट. दीदी आई कांट हियर यू. Yeah, so I'm saying there are no teams that there is no team that is going to win every game that they play. And see, criticism is fine. It's just, people are saying we are disappointed with the performance. The performance wasn't bad. It was not up to our usual standards. But understand one thing: if you drive a Ferrari on the road, you're not going to be able to drive it at 200 kilometers per hour at all times, right? There are going to be times when you would need to slow down, or you would be slowed down. So that difference, that perspective, I think gets missing. Mafra, you can have whatever you want here. I mean, history is also fine. Orange juice, whatever, man. Tea, coffee. रूह अफ़ज़ा कुछ भी चलेगा। रूह अफ़ज़ा मेरा फेवरेट है भाई, तो रूह अफ़ज़ा पी लो। थियागो एंड बॉबी एसेंशियल फॉर लास्ट सीट। नितिका, मेरे को ना फर्मिनियो का इम्पोर्टेंस बहुत लग रहा है टिल द एंड ऑफ द सीजन। फर्मिनियो इज विजिबली यार, मतलब उसका इम्पोर्टेंस। यस, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस नितिका। Congrats! I saw that today. Well done. चीयर्स, Woo! चीयर्स Cheers. नितिका। बट आई कांट हियर यू नितिका, आई कांट हियर You're नितिका, आई डोंट नो। you're on mute, I think. Thank you guys. I'm doing it at the back stage. Cheers. चीयर्स। सो मेरे को बता ना नितिका, फर्मिनो का क्या लगता है तेरे को यार? मतलब मेरे को बहुत इंपॉर्टेंस लग रहा है कि वो जो लिंक का प्ले, जोटा, साला, माने, लुइस डियाज बहुत अच्छे प्लेयर है, बट सबसे सेल्फलेस तो मेरे को फर्मिनो लगता है। ही मेक्स एवरीवन टिक, वो जो पास गोल मारने के लिए ज्यादा फर्मिनो देता है ना इन सबसे कंपेयर करके। नहीं, दैट आई अग्री। सी क्या है ना, अब अभी सादियो माने आ गया है, सादियो माने को हमने मेकशिफ्ट खिलाने लगे हैं, दैट एज दैट सेंटर फॉरवर्ड. I understand that, but obviously that is not the way Mane plays. He's our left winger. That's where he plays. That's where he's most suited to play. But there is somebody who has redefined that position. In histories, like Klopp says, it be mentioned about Bobby Firmino for the kind of role that he has developed in that position. That's false nine. So there is Yeah. some importance in that. So when Firmino is not available, that is when we need him the most. And the thing is that he does things so backstage that people don't realize the importance that Firmino has. So we need Firmino. There is no way. You know what? I'll tell you something. Since Mane, Salah, and Firmino का contract खत्म हो रहा है next season 2023 में, if there is somebody who's irreplaceable, I know Salah has a great season and he's such a good player and has been performing for us, and Mane has been terrific as well. But if there is somebody you can't replace, that's Bobby Firmino. You can't find another Bobby Firmino in the team. So what that guy provides, that selfishness factor just adds up to it, because he's just so good and humble of a guy that he is.
But then we need that because you'll notice that what Luis Diaz did against West Ham as well, कि वो खुद goals के लिए try कर रहा था because he has come there to win as well, he has come there to score as well, right? But Yeah, वही मोहम्मद साला भी करता है, and Sadio Mane tries to get an assist or something, लेकिन who is the one giving them that opportunity जब उसके पास एक मौका है गोल करने का, लेकिन वो किसी और को दे रहा है। लेकिन हमको भी होता है कि यार नहीं, तुम खुद ही ट्राई करो। हम फर्मिनो को क्या बोलते हैं कि नहीं यार, तू इतना सेल्फिश मत हो, मतलब इतना सेल्फिशनेस वाले लाइफ में मत जी, जस्ट शूट, ट्राई योरसेल्फ, गो अहेड एंड डू इट, yeah. विल अंडरस्टैंड, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दैट्स व्हाट लुइस डियाज इज डूइंग नाउ, बट नाउ एवरीबडी इज कॉलिंग कि नहीं, लुइस डियाज इज आल्सो सेल्फिश, साला इज आल्सो सेल्फिश, सो देयर इज दिस नैरेटिव। So what I feel is that what Bobby Firmino brings to the team is that link up play in that forward players that we have. या माने गोल कर देगा या कोई और गोल कर देगा, so that is what Firmino does and we need him, we seriously need him in squad. Yeah, I totally agree with you, Nitika. कि मतलब just so important यार फर्मिनो। लाइक मेरे को तो कल मैं मैच देख रहा था, मेरे को वही लग रहा था कि भाई अगर वो होता ना, कभी कभी मेरे को लगता है निधि कि थोड़ा पैनिक हो जाता है। लाइक द वे वी अटैक एट टाइम्स, पैनिक हो जाता है। एंड आई थिंक फर्मिनो वो काम प्रोवाइड करता है ब्रो, लाइक जो बाकी फ्रंट फ्रंट जो बाकी लोग खेलते हैं वो नहीं करते यार। Yeah, Firmino, this game, first leg at San Siro, Firmino was the one who opened the scoring, हाँ, right? So, Firmino, yeah, see, मेरा तो favorite player है, तो मतलब I will always be biased towards Firmino. I love Bobby, you know that, right? I think that overall he देखो is मूवी का someone नाम है who क्या? is, आई लव बॉबी वो huh? मूवी का नाम भी लगता है मेरे को। आई लव बॉबी I love ऐसा मूवी का। पता नहीं, बॉबी तो है, आई लव बॉबी पता नहीं, मतलब वो राजेश खन्ना ने बोला रहेगा। बट हाँ, मतलब बॉबी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है यार, ही इज द ग्लू हु मेक्स द मिडफील्ड एंड अटैक क्लिक। बट मूविंग ऑन, नितिका, a little bit about a big match which is also going to happen tonight. What are your predictions for Madrid versus PSG? Shall we take Messi lightly, or shall we think that the match is happening at Bernabeu? I mean, what to expect in this? But I did the prediction. I thought it's going to go 3-1 in favor of Real वाओ, Madrid. I thought that it's going to be a वाओ, high scoring match. Yeah, I thought that, 3-1 Madrid for can रियल do it. मैड्रिड। वाओ, ओके। You Yeah. won't believe it. I said the exact same thing to a couple of our friends who are Real Madrid supporters today, that it will end 3-1 and Mbappe will score for PSG, but he will go through. No, that's what I'm feeling. This can happen because when I had to do the prediction for Inter versus Liverpool, I thought the scoreline would be 1-0 in favor of Liverpool. And it was 1-0, but ठीक है, इतना हमारे फेवर में नहीं रहा, जब भी है 1-0 तो था, at least I got something right. But then ये वाले मैच के लिए तो definitely I think कि हो सकता है Real Madrid can do it. They had a terrible game. But when you think of it, the league matches that they had after that were very good. But can you predict the team according to the league performances that they have had? उससे हिसाब से तो फिर सिटी को हर मैच जीतना चाहिए था चैंपियंस लीग का, because City has been untouchable when it comes to that. तो बायर्न म्यूनिक के भी कल, चलो सॉल्जबर्ग के साथ जो भी किया है, they have thrashed them. That's what they do in Champions League. But if there is something that you can expect from Real Madrid versus PSG, it's this. But can you take Messi lightly? Can you take Neymar lightly? Can you take Mbappe lightly? You can't. They have the star-studded team. But if something that I think everybody is taking lightly is Pochettino. They're thinking that Carlo Ancelotti would come out to be that figure out there who knows how to get a win, but maybe Pochettino won't. But it's just that Madrid was so terribly bad in the first leg that I don't think that if there is anybody thinking कि PSG जीतेगा, it's just because based on that performance, but they don't realize that Kamavinga is there, even Casemiro and Mendy is not there, but they have Kamavinga. Kamavinga has pace, and pace is what Real Madrid needs against या Mbappe and people like that. दैट्स सो ट्रू। पहले लेग में तो पेस पेस वाज समथिंग। इफ यू रिमेंबर निधि देलुका एंड जीतू भाई वाज सेइंग कि रियल मैड्रिड के पास पेस ही नहीं थी। सो काफी इंटरेस्टिंग होगा। आई मीन आई यूजुअली व्हेन लिवरपूल प्ले द नेक्स्ट डे मैं कोई मैच देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं थका हुआ रहता हूँ बहुत इमोशनली और प्रोफेशनली। बट ये मैच मिस नहीं कर सकते ब्रो, दिस इज गोइंग टू बी वन फॉर द एजेस।
बट एक और मैच निधि, नितिका, आई स्टार्ट विद यू निधि। एक नेक्स्ट मिड वीक एक मैच है, मैन यूनाइटेड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। Yeah. So United could go 5 years without. Thank you, Khan sir. Madrid's not gonna come back now. This is, you said, is booked for PSG, and the press was expressed for the Fox Madrid. Okay, booked for PSG मतलब क्या पैसा दिया है क्या? But anyway, Nidhi, point ये है कि Man United can go 5 years now without a trophy. How the mighty have fallen, huh? They will go 5 years without a trophy. Uh, Please don't tell me that you think they have a chance in the Champions League. Right. So, I know bold prediction. Iska koi, Tottenham reached the final a few years back. So why not हाँ, Man but United? are you talking about reaching the final? Look, I I think mean, that they will go. They will Champions qualify. League. You know what? No, I think they will qualify against Atletico Madrid. Honestly, I know it is also something which is a little unpopular to say, but I think they will qualify against Atletico. That will happen. But I don't know. It depends on who they draw. Abhi, if they draw Bayern, then फिर बहुत problem है. नितिका, तेको क्या लगता है? मैन यूनाइटेड ये सीजन क्या होएगा? मतलब सिर्फ चैंपियंस लीग ही बाकी है और 1-1 है फर्स्ट लेग में। भाई साहब क्या मतलब, इट वाज, oh my god, what a match! I couldn't believe Man United played that bad, bro. See, the thing is that when it comes to Manchester United and the way they are playing, the way their season is going, it's very, very weird. But I actually predicted before the start of the season when they were making signings, they got Jadon Sancho, then Ronaldo was in the talks of joining of joining Manchester United. And I predicted, it's so stupid right now to even think about it, that Manchester United is winning the Champions League, not Premier League but Champions League. That's what was my prediction. And now that you think of it, the way things have been going for Man United, I think there have been clear mistakes from their part, from their signings part, and everything. And I'm not talking about Ronaldo here, because he is not the only one with the problem or something like that. But they needed a CDM. They needed a proper, like, they needed proper players, which they should have signed and gone for. But I don't know why I get a But feeling from Nitika, they the have, United. right? They have Sorry. got, they have got Varane, one of the best centre backs. They've got Ronaldo, they've got Sancho, who was so highly rated. You think वो लोग ने अच्छी साइनिंग्स नहीं किया? Not that. I'm not saying that the signings that they made are not good. I feel that they should have gone for some better CDM, central defensive midfielder, according to me. That's one area that they should have targeted, because it just feels like all the players on the pitch of Manchester United, they are there and they don't really know what is the plan. They think like we know something, they go according to that, but they're just so clueless when they're playing the game. And it sometimes, as a rival fan also, it hurts to see them the way they play. It Does actually it? hurts. Does it? Nidhi, does it hurt you to see Man United play bad? I mean, I'm just asking. Does it? Nitika has made a big Hurt it statement here. This is a big absolutely, statement by Nitika. absolutely See, you not. I have mean, to. why would it? Yeah, why would it hurt you? I mean, it's good. नितिका अपना बचपन भूल गए क्या आप? हमको कितना बुली किया है? I'll tell you something. I'll tell you something. If there is one thing that I would like to say, is that I want to win from not an injured Manchester United, but somebody that they think, कि, हाँ, these are the players that can beat Liverpool. I would like to win from that Manchester United. एकदम हारे हुए United से हार कर जीतने से मुझे कोई मजा नहीं है. तो हम we पांच have our ने match on हमने 20. तो we beat them 5-0 जब जीते 5 थे तो with फिर तो their वो best वो तो team. With, I mean, वो बहुत अच्छा था. That I celebrated. चलो, That I चलो. celebrated. Okay. That was the time that I had to celebrate. But then everybody thought Ole is the problem. फिर रैंक को लेके आए. Then everybody thought कि it's Ronaldo the problem. You know, है problem नहीं है, that I don't know that United will solve it themselves. But what I feel is that अभी 20th March को मैच है. अगर लिवरपूल हारा तो सोचो क्या नैरेटिव सेट होगा कि कौन सी यूनाइटेड की टीम से हारा है. अगर लिवरपूल जीता तो भी सोचो क्या नैरेटिव सेट होगा कि यार ये तो ऑलरेडी हारी टीम थी जिससे जीते हो.
So that is why I feel that I want to win from a Manchester United squad that they think is one of the best that they have and are in very good form, and then win it, because that is बट वो when बट बट वो नितिका कभी लगता नहीं है ना, वो मतलब 10 गेम्स इनटू द सीजन दे स्टार्ट सेइंग कि ये टीम ही अच्छी नहीं है, इसको साइन नहीं किया, उसको साइन नहीं किया, वो बस बस तोड़ने लग जाते हैं। तो वो तो कभी होगा ही नहीं ना। बाय द वे समवन सेड चैंपियंस लीग फाइनल लिवरपूल विंस, आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा यार? पागल हो जाएंगे खुशी से, मतलब। मैं तो 3 दिन लगातार लाइव स्ट्रीम करूंगा और ये पीते रहूंगा बस। मेरा मतलब रिएक्शन यही होगा, लाइक। नितिका व्हाट लेकिन विल यू डू? I think that I'm going to go out and just have fun and not record anything and just enjoy my life. Like I'm the king of the world and that's it. Don't ask me anything else. And I'm just done. Means I'll be just so happy. But I really want to win Premier League. I really want to have that trophy. Like Champions League अच्छा, mile, I'll be. प्रीमियर लीग होगा चैंपियंस लीग फिर नितिका। See, it's like I feel that Champions League में फिर से अगले साल जाके जीत जाऊंगी, लेकिन it's Premier League that I really want to win again. I want to win once more so that they don't think कि 30 years फिर से लगेंगे लिवरपूल को जीतने के, because I can't bear that thought. And I really want to, like, अगर वो लगता है there is a curse or anything, वो सब lift हो जाए, and under Klopp I want to win another domestic trophy, and that's Premier League I want to win again. यार यार मानस, हाँ बोलना नितिन। is Ronaldo the problem? I don't think so. I don't think United have one problem, or neither do I think they have one solution. I don't think Ronaldo problem solution या कोई भी player. The thing is, and Jamie Carragher very famously had said this, that you think, to Gary Neville, that you think that one player or one manager or one thing or that thing will solve it for you. It's a long process. Once you are coming off of someone like Alex Ferguson, it takes time, and that he was right. I would say he was right. And United ke signings have been great in terms of, if you look at them individually. I think they've been signing, like when we sign pieces of the puzzle. They are, I think they are just trying to sign personalities. ऐसा मुझे लगता है. यार हम लोग का जो साइनिंग है ना भाई, इट्स अपना रिक्रूटमेंट एट द मोमेंट अचूर्ड। आई मीन मेरे को, मैं नजर नहीं लगाना चाहता यार, मतलब आई जस्ट फील दैट वी आर द वन ऑफ द बेस्ट रन क्लब्स इन द वर्ल्ड। हमारे यूथ अकेडमी इज प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स, our fans are known for their passion. We've got the best manager in the world. We have players who are willing to, like Virgil van Dijk ने 220k पे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया यार। वो अगर किधर और जाए उसको 300-350k आराम से मिलेगा, आराम से। बट ही वांट्स टू प्ले फॉर दिस टीम। जो जो माहौल क्रिएट हुआ ना हमारे क्लब में एट द मोमेंट इज इनसेन। अपने रिक्रूटमेंट देख यार, अपने रीसेंट साइनिंग्स देख। एवरीवन वांटेड कोनाटे, सॉरी उपमकानो, हमने कोनाटे साइन किया और तू देख क्या है सीन। वार्नर पे सब पूरी दुनिया पागल हो रही थी, हमने जोटा साइन किया और तू देख प्रोडक्टिविटी वाइज क्या है। सिमिकास तो किसी ने सुना भी नहीं था, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता था किसी को, और वो देख कितना अच्छा फुल बैक निकला है हमारे लिए। सो मतलब यार, मतलब वी आर वेरी वेरी लकी, वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी गुड स्पेल, लाइक ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है एज ए लिवरपूल सपोर्टर। एंड नितिका की बात मैं समझ सकता हूँ कि जीतना है वापस प्रीमियर लीग, लाइक क्लॉप की लेगेसी में सिर्फ एक प्रीमियर लीग रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज 24 में शायद से क्लॉप छोड़ के चले जाएगा नितिका। और अगर पीपल विल लुक बैक 10-20 इयर्स फ्रॉम नाउ, वो सोचेंगे यार हाँ ठीक है, एक ही तो जीता नहीं, वो तो साला रैनियरी भी जीता था, यू नो। And you know Nitika, would what? you There is like to always take this this question? narrative. No, no, please go ahead. Please go I'm ahead. done with this question. I'm done with this question. Like, come on, you can't compare this. Yeah, क्या है ये? यार एक बंदा फुल बैक खेल रहा है जिसके पास दो सेंटर बैक्स हैं उसको डिफेंड करने के लिए, फिर तुम बोलते हो कि डिफेंसिव में देखो ट्रेंट इज नॉट गुड। दो सेंटर बैक्स हैं पीछे और एक के लिए तीन सेंटर बैक्स हैं पीछे, एंड ही इज अ विंग बैक। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस एंड देयर आर टू डिफरेंट फॉर्मेशंस दैट दे आर प्लेइंग इन, टू डिफरेंट टीम्स दैट दे आर प्लेइंग इन। या तो ट्रेंट होता राइट विंग बैक तो भी मैं समझ आती हूँ और हम कंपेयर करते कि क्या सीन है। अगर ट्रेंट को भी एक बंदा मिल जाए पीछे डिफेंड करने के लिए एज अ सेंटर बैक, आई वुड टेक दिस क्वेश्चन वेरी वेरी हैप्पीली, बट वो सीन नहीं है। सो अंडरस्टैंड
एंड हम इतना हाई लाइन खेलते हैं जिस तरीके से हम खेलते हैं, सो आई एम नेवर इवन गोइंग टू कंपेयर देम बोथ बिकॉज इट्स नॉट जस्टिस टू रीस जेम्स एंड देन it's not a justice to our best right fullback that there is in the world. So there is no question about it. So it is Trent Alexander-Arnold that has to, you know, he is the creative player in our team. He will go forward and create some chance or the other. वो बॉल टच करेगा और वो असिस्ट हो जाएगा, वो बॉल टच करेगा, वो क्रॉस हो जाएगा, एक डायनल बॉल बन जाएगा. That how good Trent is, you know, and you can't compare that with anybody else. So I don't like to take that question because I'm done explaining कि it's not fair to compare these two. Nitika, I've never seen Nitika this. जज्बाती हो गई. जज्बाती हो गए. अच्छी बात है, होना भी चाहिए. And you explained it so well. By the way, football lover, यार मतलब thank you. And Thank you so I'm much. sure you know who Nitika is. Her channel is IndiePop. आधे हमारे followers, subscribers are because of Nitika. But अरे thank you so much for writing that It's comment. true. But यार ये बात एकदम सही है निधि कि मतलब रीस जेम्स खेले अगर राइट बैक, ये राइट विंग बैक है, अलग ही पोजीशन है. और लोग यार बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में फेबिनो है. भाई तुम्हारे सिस्टम में भी तो जॉर्जिनो कांटे है, मतलब करते हैं ना वो डर्टी वर्क. कोविच ऐसा थोड़ी कि वो सब माउंट जैसे 3 प्लेयर खेल रहे हैं. तुम्हारे पास कोविचिच स्लैश जॉर्जिनो कांटे खेलते हैं और 3 सेंटर बैक्स है. तो उतना कवर है, ट्रेंट के पास नहीं है वो कवर. लाइक ये आर्गुमेंट कोई, रितिका ने एकदम सही बोला यार, मतलब वो आर्गुमेंट कोई बोलता ही नहीं है. यार एक्चुअली ये ना ये आई थिंक यू नो दिस वी हैव स्पोकन अबाउट दिस अर्लियर आल्सो. दिस इज अ सोशल मीडिया थिंग कि यू नो एक पोजीशन पे दो प्लेयर पकड़ लो एंड इट्स ऑलवेज वर्सेस अब समथिंग. तो यू नो ट्रेंट वर्सेस रीस, ट्रेंट वर्सेस मतलब कुछ दिन पहले एरन वैन बिसाका यूज्ड टू बी एन ओपिनियन. वैन डाइक वर्सेस दिस, वैन डाइक वर्सेस, खैर वैन डाइक तो कांस्टेंट है, वैन डाइक वर्सेस वो चेंज होता रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी भी इफ यू लुक एट सोशल मीडिया इट्स ऑलवेज मॉडरिच इज बेटर देन जेरार्ड, जावी इज बेटर देन जेरार्ड, लैम्पार्ड इज बेटर देन जेरार्ड, स्कोल्स इज बेटर देन जेरार्ड. उसमें कांस्टेंट एक ही है. तो मैथमेटिकली अगर इस चीज का आंसर दूं ना तो उस जो जो चीज कांस्टेंट रहती है ना उसको बोलते हैं बेंचमार्क मैथमेटिक्स में. और बेंचमार्क इज बेसिकली व्हाट यू मेजर योरसेल्फ अगेंस्ट. सो देयर इज योर आंसर ऑन हु इज बेटर. नोबडी इज आस्किंग रीस और एरन वैन बिसाका का कंपैरिजन ज्यादा नहीं होता है ना. ये इतनी सही उन बात दोनों बोला. का उन दोनों का कंपैरिजन होता है ट्रेंड से. तो देयर इज योर आंसर ऑन हु इज बेटर. दैट्स सो ट्रू निधि. उस दिन कोई मेरे को बोल रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और आई वाज प्लेइंग फुटबॉल और कोई मेरे को बोला लैम्टी इज बेटर देन ट्रेंट. मैं बोला यार उसका पहला नाम बता दे तू मेरे को, और उसको नहीं पता था. मैंने बोला कि ये एक दिन प्रीमियर लीग का शो देख लिया और लैम्टी का नाम सुन लिया और बोल दिया बस. मतलब और लोग यू नो लाइक नितिका, मेरे को ऐसे लगता है लोग ये अभी भी समझते नहीं कि ट्रेंट अभी भी 25 नहीं हुआ है. आई डोंट थिंक वो 25 साल का है अभी भी. वो लिटरली नहीं अपने नहीं 23 का है प्राइम, शायद वो अपने 23 का प्राइम है में वो. घुस रहा है अभी. लाइक ही इज एंटरिंग इन हिज प्राइम राइट नाउ. लाइक इट्स रिमार्केबल हाउ गुड ही इज यार. No, absolutely, and that is the thing, you know, and not taking anything away from Reece James or Tariq Lamptey. Nobody, you know, they are very 100%. good players. Absolutely, but when it comes to comparing players, that is where I have issue with because क्या है, and you know, I think Nidhi said it correctly, perfectly. That क्या है ना, एक benchmark set कर दिया है ट्रेंट ने कि अब से लेके आगे तक जो भी राइट फुल बैक होगा वो ट्रेंट के हिसाब से कंपेयर किया जाएगा कि जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है. कोई भी हम राइट विंग बैक के साथ कंपेयर नहीं करते. अब डमफ्रीज है, वॉज डमफ्रीज बैड? लाइक अगर हम इंटर मिलान की बात करें, ही सच अ गुड प्लेयर एंड हैज बीन सो इम्पोर्टेंट, बट डमफ्रीज का कंपैरिजन नहीं होएगा ट्रेंट के साथ. कुछ प्रॉब्लम है डमफ्रीज में? नहीं है, बहुत सही प्लेयर है यार. बट क्यों नहीं? बिकॉज यू अंडरस्टैंड एक डिफरेंट लीग है, एक डिफरेंट क्लब है एंड एक डिफरेंट पोजिशन है. हाउ कैन यू कंपेयर कि मोहम्मद साला और वैन डाइक या फिर मोहम्मद साला या फिर तुम थियागो सिल्वा कैसे कंपेयर कर सकते हो? डिफरेंट पोजीशन दे आर प्लेइंग इन. Then how can you compare Reece James and Trent? That's a different position. So I just don't understand the comparison at all. Nitika, very off topic. Do you drink beer in general? Yeah, I do. अच्छा, so which is so ये beer पे बातचीत. By the way,
ओके, सो हमारे पास 30 और लोग जो देख रहे हैं। बियर पे बातचीत पे आपका स्वागत है। ये हमारी नई पेशकश है मैनेज इन द मॉक पे। वी वांट टू डू दिस ऑन अ वीकली बेसिस। वी वांट टू ड्रिंक बियर एंड टॉक अबाउट फुटबॉल इन जनरल। वी डोंट एंडोर्स ड्रिंकिंग बियर। अगर पीना है अपने माँ बाप के पैसों का मत पियो, खुद कमाओ खुद पियो। एंड वी डोंट प्रमोट इट, वी जस्ट लाइक टू कंज्यूम इट। हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं इधर। इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बट एनीवे नितिका, विच बियर डू यू लाइक? तेरी फेवरेट बियर कौन सी है? I was actually having today Budweiser. So I went for Budweiser today because I wanted to have that. I feel that, hey, high five. So I feel that it's very smooth and it's really nice. I like Bira as well since you're having Bira. But yeah, I like Bira as well. But then today I went for Budweiser. I had to celebrate. It was 10K, and it's an organic growth that I had with my channel. I didn't know anyone. So that's why I thought that, I need to celebrate. दो क्वेश्चन तेरे लिए नितिका, दो क्वेश्चन। ए, तू अभी क्यों नहीं कंज्यूम कर रही है हमारे साथ? एंड बी, हाउ इज द जर्नी बीन लाइक फॉर यू? Kunal will take your question in a bit, but yeah, Nitika is on our channel and she's reached 10K. So, Nitika, how has the journey been for you? Because we discovered you a few months back and we reached out and we reached. So, how Hmm. has your journey been, yeah? It's been so much fun, to be honest. I was prepared from the first day that I'm going to get a lot of sexist comments. I'm going to be judged a lot Yeah. on whatever I have to say about it, whatever the knowledge that I have about the game. नहीं, मैं निधि Uh, को बोल रहा हूँ म्यूट कर दे, बिकॉज तेरा फिर, हाँ okay. सॉरी या। So yeah, I knew, matlab I prepared myself before getting into this that in चीजों से, in comments से नहीं डरना है. So I remember when I had like 70-80 subscribers, so there was somebody there was a hate comment, okay, and I thought, man, I could not sleep that night. I was like, okay, I'm done, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब seriously like that. Then I woke up in the morning and I was like, रात गई बात गई, leave that thing and let's just move on, because that's not how I can move on, because there are going to be people who will judge you, who are going to question you on every little thing. But to be honest, I've had really good support from people as well, so I won't take that away. There have been such nice people in the journey who have subscribed to my channel from the day one, and they are with me through that day, and it's been really fun. And I like that it's been that organic growth since day one. I didn't know anyone. I didn't have any Insta page back then when I started my YouTube channel. So everything that I have right now in terms of growth, it's pure organic growth from YouTube. So that's why I feel whatever I did, whatever I made, it has been so good and so special for me. It's like my own child, if I can say that. So everything that I do, I'm very focused on that. So कि वो उसका कुछ गलत ना पकड़ा जाए. And that answers that question as well, that you asked me, that why am I not drinking here? Just I don't want that people to perceive it any other way, because there are people who are very judgmental out here. So that's why I thought that. बट नितिका, तू अगर अगर तूने 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी प्राप्त कर लिए हैं, तो जजमेंट तो इज गोना बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। यू हैविंग अ बियर ऑन मेनेस, सी मेनेस इन द मॉन्क। मैं तेरे को एक बात बताता हूँ हमारे चैनल के बारे में, निधि विल आल्सो टेल। It took us, in the first 16 months, it took us 16 months it took us to reach 700 subscribers. Okay, 16 months of dedicated content and everything. And we are known for having beers when we talk. So तो उसका टेंशन मत ले, तो हमारे चैनल पे आई है। अपने चैनल पे कोई कोई जज नहीं करेगा तेरे को। But don't you think, Nitika, like when you're talking about football in general, consuming beer is not a big thing? I mean, I know ये off topic हो सकता है, but don't you think you should get over it now? Like you are so popular, you speak well, you are knowledgeable, you shouldn't care about this. I am okay about it, but then there is one thing, that I come from a small town. All right, so there are people who still think that women are not allowed to drink. There is a certain way that life should be. So that is how I Same am. pinch, Nitika. I come from a small town myself. Absolutely. So that is what, at what they think is like
तुमको लगता है कि मॉडर्न का डेफिनेशन इज ड्रिंकिंग बट Hmm. it's just not that. So that is why I just don't want to put the message across that just because this is what has happened on my channel, if I've started this from myself and everything that I've done here, that defines कि हम फिर ड्रिंक भी कर सकते हैं, हम ये भी करते हैं. Just because of that I avoid doing it. Otherwise I don't have any problem with it when it comes to it. Okay, Nitika, अरे यार sorry to नहीं, put you on the spot if that was uncomfortable for you, but I ना ना just ना wanted to say we all are very proud of you, यार. दस नहीं यार हजार निधि, नितिका, मैं दस तो हजार निधि, आई 10,000. भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि look नितिका, honestly I'll tell you something. I have we have started this channel in October 2020. YouTube पे subscribers लाना ना is the toughest thing in the world in terms of digital acquisition when it comes to, and I work in this industry by the way. तो मैं पिछले 11 साल से I work in the edtech industry. I know how YouTube पे acquisition कितना tough होता है because there is so much of things to get distracted by. So I think फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है. 10,000 सब्सक्राइबर्स, आप लड़की हो कि लड़के हो कि आप मतलब चेयर हो या आप क्या भी हो, डजंट मैटर. आई मीन 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑर्गेनिकली, it will only come if you know what you're talking about. It will only Yeah, come that's if so true. there is quality. I can tell you one thing. When I watch your videos, I am a huge fan. मतलब बात तो है ही, but I love the way you edit your videos. The उसमें flow कितना, like for example, there is not a dull moment in your entire videos. Like 40-40 मिनट के videos और कभी डल नहीं होता है. I'd like That's to so think कि true. हमारा भी वैसा है, but again मैं अपने चैनल पे कमेंट पास नहीं कर सकता हूँ. I can only talk about other people. So I think well done यार. It doesn't matter what people think. Small town, big Thank you town so यार. much. Thank you. Yeah. Yeah, you're I really have smart. been on a watch along with you where you kept on receiving nasty messages. I was there. I saw that. So, but the way you handled it and everything, तो फर्क नहीं पड़ता यार. लोग क्या बोलते हैं, लोग तो बोलेंगे ही. मतलब आज के डेट में लोग प्यूडीपाई को बोल देते हैं कि यूजलेस है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं. Yeah, yeah. No, no. Thank you so much for all that. Seriously, means a lot to me. Fair. So that was Nitika, 10,000 सब्सक्राइबर्स. निधि, हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा 10,000 पहुंचने के लिए, मेरे को लग रहा है, बट हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं. निधि निधि कोई कमेंट्स है किसके बारे में बात करना है क्या? बिकॉज हमने ट्रेंड का टॉपिक मैं बहुत वही अच्छा देख रहा किया है, हूँ. तो काफी. नितिका, if you want to like make a move anytime, please feel free. If you're enjoying, stay with us. Yeah. Like I mean, up there to Yeah, is yeah. you. It's no. fine. या if you It's want to fine. make a move, I'm just letting you know, हम लोग बात करेंगे अगर करना है. निधि, मेरे को एक थॉट आया था which I want to ask you guys as well. लास्ट 2-3 मैच में मेरे को ऐसे फीलिंग है कि हम थोड़ा क्लिनिकल नहीं थे. ओके, लिवरपूल देखो भाई, आई हैव सीन प्लेयर चेंजिंग थ्रूआउट सीजन. केटा डिफेंडिंग has gone up, Van Dijk has gone back to those bottles. Matip, nobody predicted Matip. One is good season. Okay, yeah. दीदी, मेरे को एक फीलिंग आ रहा है हमें बीच में एक गेम है ना, मेरे को स्टार्ट कर देना चाहिए. यार मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि देर इज फटीग. आई साला लुक्ड वेरी टायर्ड yesterday. He is usually so much sharper compared to कल यार वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था. फेबिनियो के भी challenges, it felt like he was going in but not getting there. तो वो तो मीनामिनो को स्टार्ट नहीं भी किया, तो आई थिंक we have enough now. Firmino is going to be back, so I think we should, for example, Diaz didn't play, so maybe Firmino and Diaz start, and one of Salah, Mane. The problem with Salah is that he would um the problem is that साला वो हर गेम खेलना चाहता है. बाय द वे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. ये सब दोगलापन है. ये सब दोगलापन है. मैं अभी दोगलापन निकालता हूँ तुम्हारा. Oh God. Yeah, I Who don't was mind he? being Who as was I he? don't mind. Yeah, I don't mind being as Mac. I don't mind being as rich as Jasneer Grover. लेकिन ये Who सब does though? दोगलापन है. Who does? Who doesn't? Sorry.
बट हाँ सॉरी निधि तू कुछ बोल रहा था आई तूने Yeah, yeah. So, कमेंट no, no, किया so I was talking ki, bhai, we have a lot of fatigue that is, set into our system. Which town? Menace. Menace is from Mumbai. I am from Ranchi. Nitika is from Punjab. नितिका So yeah. which area you from again लोकेशन एग्जैक्ट मत बता दे लोग फ्रीकी होते हैं थोड़ा Hmm. I'm from But, Sangrur, so it's near Patiala. I'm from Sangrur. ओके हाँ हाँ नितिका डू यू थिंक because of the lack of clinical edge over the last few games, we can give someone like a Minamino a chance because जब भी Minamino खेलता है वो गोल मारता है हमेशा. You know what? This is the exact conversation I was having with Anfield Agenda. Craig, I invited him on my channel. So we were discussing about this thing that, what is it that is going on related to our finishing. So we were talking about it, and this is what we came to the conclusion that definitely देखो माने एंड साला को रेस्ट नहीं मिला है एफकॉन के बाद साला तो डायरेक्ट आ गया ही वाज इन दैट एंगर जोन की यार ट्रॉफी नहीं जीते आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ इन सम वे और द अदर एंड देन माने ऑल्सो केम वेरी अर्ली सो इट्स नॉट लाइक कि हफ्ता कुछ 15-20 दिन का रेस्ट लेके आए हैं सो there is that fatigue, they are fatigued, it's visible, so they need rest. बट अगर साला अगर माने रेस्ट करता है हम लुइस डियाज को खिला देंगे है ना छोटा है लेकिन अगर साला रेस्ट करता है क्या हम केट गॉर्डन कैन वी गो विद समबडी लाइक दैट या मीना मीनो है या फिर ओरिगी है कैन वी गो विद प्लेयर्स लाइक दैट सीन ये है कि हम एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पे हैं अभी इस टाइम पे है ना और बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस रहे हैं अभी हमारे अभी वेस्ट हैम के साथ तुम रिस्क नहीं ले सकते हो पहला लेग हारे थे कैरेबाओ कप में तुम रिस्क नहीं ले सकते हो कैरेबाओ का फाइनल है फिर हम बोलेंगे कि क्लॉप डोमेस्टिक कप सीरियसली नहीं लेता अब जब सीरियसली ले रहा है तो उसको करने दो यार जैसा वो खिला रहे फिर इंटर मिलान के अगेंस्ट अगेन आई डोंट नो व्हाई द नैरेटिव वाज सेट मैंने पहले भी अपने जितने भी मैंने प्रीव्यूज किए थे मैंने बोला था कि व्हाई इज दिस नैरेटिव दैट Inter Milan is clearly the underdog just because there is not one player. Nicolo Barella नहीं है इसलिए you're saying that Inter Milan is underdog अगर तुम उस हिसाब से चलने वाले हो because they have such quality midfielders and that's what I spoke about in my preview. They have such good quality players. Lautaro Martinez क्या नई quality का player है तुम उसको नहीं count करोगे as one of the best out there. बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू एक्सपेक्टिंग दैट वी कुड हैव गॉन अहेड एंड वन द गेम वेरी इजीली तो हाँ फटीग भी है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मैचेस दैट वी आर बीन हैविंग विद द टीम्स या तो अगर थोड़ा अगर हाँ कल मान लो एक लोअर हाफ ऑफ द टेबल के साथ मैच है एफए कप में नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ हमारा मैच है let's see if we are not able to get a goal against them as well बहुत difficult हो रहा है then I would understand but now that जिस तरीके से मैचेस थे they are very important है हमको पता है एटलेटिको मैड्रिड के साथ भी हमारा एनफील्ड में किस तरीके से मैच गया था यार तो हम रिस्क नहीं ले सकते इन इस टाइम पे स्पेशली हाँ अगर कल के मैच की बात करें आई वुड थिंक दैट स्टिल हाँ हम डिफेंसिवली ठीक थे बट आई वुड हैव गॉन फॉर कोनाटे आई वुड हैव स्टार्टेड द मैच विद हेंडरसन over Curtis Jones. So I think that was something that I would have gone for अगर मेरी बात करें तो but that's Klopp. He has been with the team. He knows the squad. He knows much better than me. So I think that whatever he did must be fine. But that's my choice. तो अगर सामने से गोल नहीं आ रहे वो हाँ problematic है. I'm not saying everything is good and all. But ठीक है थोड़ा time दो. I think things will fall into its place. Yesterday I think Curtis Jones was काफी good for his contributions. He Sorry, was sorry, very good. yeah. He was very very good one of the best players out there but you have to understand Curtis Jones ka natural position is being forward right he is not meant to be Attacking. a defender Yeah. एग्जैक्टली सो Yeah. क्या होता है व्हेन हेंडरसन इज देयर हेंडरसन नेचुरली नंबर 6 खेलता है तो उसको पता है कि उसको ट्रेंट को भी कवर देना है तो ट्रेंट को एक क्वेश्चन मिलता है आगे फॉरवर्ड मूव करने का एंड देन अगर नोटिस किया हो फर्स्ट हाफ में ट्रेंट बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहा था इवन दो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आउट देयर बट ट्रेंट को आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा था बिकॉज कर्टिस वहां जाके उसको बैक नहीं करेगा एंड इट्स आइवन पेरिसिच जिसके अगेंस्ट ट्रेंट को डिफेंड करना है एंड आइवन पेरिसिच आगे अलग क्लास है यार चलो नोगलू उस जगह पे है यार तो देखना पड़ेगा तो दैट इज व्हाई ट्रेंट डिड नॉट गेट द चांस टू मूव अहेड तो अगर हेंडरसन होता हेंडरसन थोड़ा कवरेज प्रोवाइड करता डिफेंसिव ड्यूटीज में Right. ट्रेंट आगे जाता कोई ना कोई क्रॉस क्रिएट करता पास क्रिएट करता थोड़ा सा कुछ वहां आगे करता लेकिन सिंस दैट वाज नॉट हैपनिंग दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि शायद हमको शुरू
हेंडरसन के साथ करना चाहिए था, बाद में हम कर्टिस जोन्स को लेके आ सकते थे, इवन दो कर्टिस जोन्स वाज वेरी गुड, बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, द वे वी प्ले, एंड ट्रेंट डजंट गेट दैट कवरेज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. 100%। और मैं निधि को ये बोल रहा था, नितिका, कि कभी कभी लोग ये बोलते हैं कि हेंडरसन काफी वाइड राइट में चले जाता है, क्यों जाता है। मैं निधि को यही, वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन में यही बात कर रहे थे कि लिसन, हमारा बिगेस्ट एसेट is Trent on the right back position, providing those assists, Salah on the right as well. And Hendo goes into that position to, like facilitate Trent doing that. So इसलिए अगर तू हेंडो का हीट मैप देखोगे तो वो राइट में ज्यादा रहता है. That is a tactical thing. वो खुद जाके नहीं करता है निधि. वो खुद जाके नहीं So करता है. this was explained. Actually, what was happening is that teams were sort of flanking that area जहाँ पे Trent usually operate कर रहा था. So because of that, what was happening was that Salah and Trent दोनों का movement restrict हो रहा था. Now because Henderson is taking up those positions, Trent is able to move inside. He is able to roam more effectively. So this हाँ even ब्रो, ट्रेंट बीच में आता है. Like Trent is in the yes. middle at times. हाँ, because otherwise क्या हो रहा था ना कि that space was being taken by other defenders or that space was being blocked off by the other teams. So this is a tactical change. Is what is happening here, and this was explained by Henderson also in the press conference before Inter कि ये करना ही है. By the way, let's take some comments. We've been talking for a long time. Let's take. सादियो माने next hat trick, next match hat trick मारेगा मेरा भाई साला. सादियो माने has joined our live and निधि, कैन यू इमेजिन, ये एक्चुअली सादियो माने बैठा है और हमारी बात और सुन हिंदी रहा में बोल रहा है है. और हिंदी में बोल रहा है next match hat trick मारेगा मेरा भाई साला. Yeah, wow, it'll be amazing, man. We were sitting back because of fatigue, or were we managing the game brilliantly? Nitika, what do you think? Liverpool doesn't sit back. Do we sit back? Have you ever seen Liverpool sit back? That's what I was thinking, अगर 2 गोल का लीड है, अगर क्लॉप का गेम प्लान ये रहता कि देखो भाई 2 गोल का लीड है, तुम टेंशन मत लो, एनफील्ड पे मैच है, कंसीड नहीं करेंगे, तुम बस जाके बैठ के सिट डीप करो और डिफेंड करो, लो ब्लॉक में डिफेंड करेंगे बस. Is there a possibility that Klopp का कभी भी ये गेम प्लान हो सकता है? Liverpool is not associated with that kind of gameplay. So I think that there is no way that we were sitting deep or anything. I just think that we didn't have a good game. It's as simple as that. We didn't have a good game. Inter Milan did, because come on, you have to give them credit. उनको सिट डीप करके क्या करना था? उनको क्या करना था कि लिवरपूल को कंट्रोल दे क्या गेम का, हम काउंटर पे हिट करेंगे. उनको गोल्स चाहिए थे, हमको नहीं. वो वहाँ पे आए थे गोल्स मारने के लिए. उनका ऑफेंसिव गेम होना चाहिए था. दैट्स द टैक्टिक. दे हैड टू बी पूरा उस तरीके से कि हमको स्टार्टिंग में ही गोल लेना है, देन हम थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे एंड देन विल गेट द सेकंड गोल. 2-2 ड्रॉ होगा, देन देखेंगे एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, अगर पेनल्टीज ज्यादा, दैट्स अनदर थिंग. बट दे came there to score first. They came there to give Liverpool a tough time, because उनको sit back करके क्या करना था? That's what I'm saying. There is no way that they came there just to sit back. फिर तो गेम दे ही दिया ना लिवरपूल के हाथ में. फिर तो क्या, ये हम भी नहीं करेंगे अटैक, तुम भी मत करो. So I feel that this is not that. You have to give credit to Inter Milan also there, because they came there with an offensive mindset, and that's what they did. They did brilliantly. They pressed so well. They pressed so damn well. So I Yeah. think that they had a great game. Yeah, yeah. Skriniar yesterday was so good, मेरे भाई. Skriniar और Vidal in his, Petrovic as well. Man of the match. but Vidal, I think man of the match. Easy. मतलब Man of the match, दिया Vidal. वो Skriniar को, but Vidal, Skriniar दोनों, Brozovic, like she mentioned, like sorry, now the beer bobs are coming out. They were absolutely wonderful यार yesterday, and Martinez का movement मेरे को बहुत अच्छा लगा, and commentator was constantly linking him to Manchester City. I don't know why that was happening. रोहन is like, साला जब से AFCON से वापस हाँ. आया है तब से वो बात नहीं दिख रहा है. What do you think means थोड़ा level कम हुआ Did you है? just say Rohan? Sorry, Did you just say Rohan? what? Rohan, yeah. You said Rohan. रोहन का आया ना ये मैसेज? हाँ हाँ हाँ. नहीं, it's हाँ, fine, it's fine. तू क्या हुआ तेरे को? नहीं, मेरे को कुछ और सुना. अच्छा, ओके. You, मैंने you रोहन heard का the मैसेज. you heard the American pronunciation of Rohan. Did you hear that?
नहीं Yeah, yeah. मैं रोहन ही बोल रहा था, बट क्या है ना, BRPN सेकंड बार जब हिंदी इंग्लिश में लिखा होता है ना, तो फिर बहुत ही कंफ्यूजन होता है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि साला जब से See, people आई are एम like, गोइंग no, टू, he said Rohan. That's what I'm saying. Did you say Rohan? And I'm like, नहीं नहीं, man, what आई is सेड रोहन, आई सेड रोहन ओनली, नॉर्मल। मैं इतना सेकंड बियर में ये हालत नहीं होता मेरा भाई लोग, ये बियर पे अरे बातचीत है, ये वो बियर पे यारी रोड बातचीत में है, रहता नॉट लाइक ड्रंक वो पे यारी रोड बातचीत। में रहता है, पेडर रोड में थोड़ी रहता है कि रोहन को रोहन बोलने लग जाए। मैंने सिर्फ रोहन ही बोला था। नहीं यार, रोहन, द पॉइंट ये है कि आई आई लाइक, हमने जैसे रीइटरेट किया है कि बात की, आई थिंक सब लोग थके हुए हैं काफी। आई एम नॉट वरीड अबाउट साला। साला 2 बार वुडवर्क पे मारा यार, मतलब ऑन अनदर डे। साला का इंटरव्यू देखा मैच के बाद, उसने बोला कि आज मैंने 2 बार वुडवर्क पे मारा है, शायद से नेक्स्ट मैच में 3 गोल मारूंगा। Like everyone is positive. Jurgen Klopp said, "अच्छा ठीक है, if we had to lose a game this year, I'm happy it has happened now." So everyone is positive. So I don't think we have to take too much stress about such things. Did you have any more comments coming in? By the way, thank you so much. I'm seeing so many people who are watching this. Really We have appreciate it. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, please do subscribe, and Nitika ke channel pe, if you've not subscribed, I think you would have by now. Please do subscribe to IndieCop as well. नितिका, बायर्न म्यूनिख के बारे में जरा थोड़ा एक बात कर लेते हैं। कल 7-1 जीते, 8-2 ऑन एग्रीगेट। मेरे को कभी कभी, सो मैं बुंडेसलीगा कवर करता हूँ सोनी के लिए, मैं बायर्न म्यूनिख के गेम्स देखता हूँ ना, मेरे को बहुत डर लगता है। बिकॉज भाई Hi, वो लोग sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you. I've gone on multiple channels to talk about the UCL, and I've spoken to a lot of people. Generally, in this season, when you talk to them and you ask them favorites for the Champions League, nobody seems to say Bayern Munich. For me, बिकॉज वो लोग they are बुंडेसलीगा my नहीं pick. देखते। For me, they are my pick to win the Champions League. Honestly, right? And I know people will not like it because I'm a Liverpool fan, and of course I love Liverpool. But for me, I think Bayern Munich has a very good chance of winning the Champions League this time. It might be because of the inconsistency, because I feel that everybody must think कि यार अगर it's there is Lewandowski, there are such world class players in that Bayern Munich team and they should win every match easily. तो क्या होता है ना, narrative बंदा Bayern Munich का मैच तब देखता है जब वो हारते हैं, कि यार ये कैसे हार गए, there is that mindset I feel। ये तो हो ही नहीं सकता। सॉल्जबर्ग के Bayern वर्सेस सॉल्जबर्ग कोई प्रीव्यू नहीं बना होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, because it's given Bayern is going to win that the first leg, but they didn't। तो क्यों इतना हाइप हुआ बायर्न वर्सेस सॉल्जबर्ग सेकंड लेग का, जस्ट बिकॉज वो गेम बायर्न डिड नॉट किल इट, बट सी व्हाट दे डिड इन द सेकंड लेग। सो दैट्स व्हाट दे डू, वो आराम से नहीं जीतेंगे कि ठीक है हम 2 गोल से लीड से जीत गए, बस अभी आराम से रहेंगे, नहीं। तो द रिजल्ट इज ऑलवेज 8-2 और 7-1 और समथिंग लाइक दैट, सो इट्स स्कैरी against Bayern Munich, but you cannot think that not the favorites to win UCL, because you can't take out Bayern Munich whenever there's a discussion like that. You can't take out Man City and Bayern Munich, I feel. These are the two teams that I feel that you can't take out from the discussion. बायर्न म्यूनिख का सीन क्या है ना भाई, मेरे को लगता है कि मैंने जितना भी कवर किया है, डिफेंसिवली दे ऑलवेज आर वल्नरेबल। दे आर this season they are very much vulnerable. Upamecano has not lived up to the hype. Nicolas Sule is going to leave for Dortmund next year. Udhar vulnerability hai. Alfonso Davies has not played since last month or two because of heart condition. He's not been passed to play. So defensively, unka issue hai. Goretzka has been out because of a knee injury for a long time. So Bayern Munich do give away a lot of chances. And first leg में they could have lost by 3 goals. They could have lost by 3 goals. मैंने वो मैच कवर किया था कल भी। Before they scored the goal, Salzburg had 2 unbelievable chances. मैं बता भी नहीं सकता हूँ कितने अच्छे चांस थे। And if Salzburg had taken the lead 2 goals, things would have been different. Bayern always gave away chances. और Nagelsmann कभी 3 at the back खेलता है, कभी 4 at the back खेलता है, उसको समझ नहीं आ रहा उसका सिस्टम क्या है। So I don't think Bayern will win the Champions League this year, but they are going to, like, if we get Bayern Munich,
भाई इट्स गोना बी अ ग्रेट गेम भाई, 7-8 गोल होने वाले हैं, ऐसा टाइप्स होगा मेरे को तो लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है लाइक कम क्यूमुलेटिवली। मानस भाई शो कितना बजे शुरू होगा आपका? आज मैं शो प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज बियर पी रहा हूँ। आज अर्पित कर रहा है, कल मैं कर रहा था, बट शो 12:30 बजे शुरू होगा। हाँ, अल्फोंसो अल्फोंसो डेविस डेविस एंड मस्त यूट्यूबर बन गया है अब, मल्टी टैलेंटेड यार। वो तो मैं भी हूँ, तो मेरी भी तारीफ करो। मैं भी नौकरी भी करता हूँ यूट्यूबर नहीं, but का। your partner is not as talented as, with all due respect to your partner, she is not as talented as Alfonso Davis's partner, right? She is a gold medalist in the Olympics with Canada. That is the She's a question I But winner. asked you both. That is the yeah, question I asked you guys. Remember Jordan Yeah, and yeah, yeah. Alfonso Davis wala. Bhai, she is so good. She plays for PSG as well. Yeah, Bayern if are. Bayern हार रही है, that means they are giving head start to other teams. यार उसका तो नहीं पता, but Bayern are a very good team. I have, in the Champions League, I always get a good feeling about Bayern Munich. In terms of, I hope, if we face them, then then we win. Um, Nidhi bhai, abhi thank you so much. Guess who are not the favorites, ये तो courtesy of our ये तो फोर्स्ड कॉम्प्ली ये तो फोर्स्ड कॉम्प्लीमेंट था निधि, लाइक मतलब। हाँ, देख, मैं सेल्स में हूँ ना, मेरे को आता है निकालना, तो डजंट आई नो हाउ टू सेल। बेच दिया ना अपने आप को, आ गया ना कॉम्प्लीमेंट, वही, दैट्स व्हाट मैटर्स। Anyway, guess who are not the favorites, courtesy of our scam of the season for selling an overpriced fridge. Akash is a Leicester City fan, by the way, and we all know who he's talking about. But Nitika, did you watch the game? Did you watch the Manchester derby? It was almost surreal how bad Harry Maguire was. Let me ask you a question. Lovren against Spurs at Wembley when we lost 4-0, or Harry Maguire against Manchester City in this game? Who was worse? That's a good question, huh, Nidhi? That's a very good question. I would say Multi-talented Harry Nidhi. Maguire. I would say Harry Maguire. Yeah, come on. Harry Why? Maguire was like, the thing is that, but पता क्या है, I understand that क्या हो रहा है ना मैन यूनाइटेड के साथ. I just don't feel that you can blame it on one person. I don't think that कि Harry Maguire is the only problem. Just like there was a question, is Ronaldo the problem? Ronaldo is not the only problem. Rangnick is not the only problem. Ole was not the only problem. I feel there's a lot that has to change for Man United to find what they had under Sir Alex Ferguson. So I feel that it's not something that you can blame it on one person. A lot has to change. The mindset has to change. So for all that to happen, to find what their formation is, to know, to get the statements out of the club, like अभी राशफर्ड ने बोला ना कि मुझे कहीं और, I am going to look for some other club, this is not what I wanted, I'm not getting game time and things like that. So इमेजिन अगर कल कर्टिस जोन्स मतलब इस तरीके से कोई ऐसा स्टेटमेंट मारता है हमारा अकेडमी का प्लेयर, तो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज दैट्स नॉट something that Liverpool provides, and that's not our philosophy. So I feel a lot is, I think, wrong at Man United. So you can't just blame on Harry Maguire. Yes, Harry Maguire is the problem. Yeah, the only yeah, see, the Glazers are also the problem. So there are a lot many things that are the problem. So I feel maybe. You don't think? I don't think they are the only problem. Look, yeah, see the Glazers. ठीक है, I mean, obviously they are not the most perfect owners and they take money out of the club and everything. Yeah, but they gave money. They gave money. It was Ole who wanted a certain players. Uh, See, I'm not a Man United fan. I don't follow them that closely, but I don't think they get into the discussions about which player they have to buy. I don't look Ronaldo ka signing. So I think Ronaldo, and again, United fans will hate me for saying this, but I think Cristiano Ronaldo bullied Manchester United into buying him because he basically did that whole drama that I'm going to City, or at least that Yeah, was the drama his agent did, and it was more of key. It became a point of prestige that we can't let him go to Manchester City. That's why yeah. they signed him. And again, this is not to say that Cristiano Ronaldo is a bad player or anything. He's fantastic.
but I don't think and people will say that they got him for cheap and all that, but yeah, you guys are paying him 500k, almost 500k a week. It is a lot, right? And I don't think they needed. Now, because of that, Sancho gets a little impeded because Ronaldo came in. What are you doing? Like I said, they buy. I get a feeling that they buy personalities and not, you know, pieces that fit. That's my sense. मानस तेरे को क्या Uh, लगता है? so I'm sorry to cut here, but I was just having a discussion with a Man United fan. So it goes like that. They talk in numbers, that अभी हम 100 million spend करेंगे on a defender, on a CDM. अभी हमने जेडन सांचो ले लिया इतने का. अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम एक CDM पे भी लगाते. But then that is the point. It's not about money. It's about a player who fits in your system, who's ready to play for you. So it's not like एक अच्छा player, एक डेक्लन राइस ही चाहिए तुमको अपने टीम में, अपनी टीम सुधारने को. दे कैन बी एनीबडी एल्स, दैट इज द पॉइंट कि तुम थोड़ा वो जो स्काउटिंग होता है ना, अगर वो बेटर तरीके से हो, रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट द नंबर्स. यस, डेक्लन राइस इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट इट्स नॉट लाइक कि मैन यूनाइटेड डेक्लन राइस के बिना चलेगा ही नहीं. तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि जो स्काउटिंग जो है ना उनका, वो ढंग से नहीं हो पा रहा है. सो इफ इट्स अबाउट द नंबर्स, दैट्स व्हाट आई फील अबाउट पंजाबीज. तो पंजाबीज को अगर तुम एक बार नंबर दिखा दो कि इतना महंगा है, तो वी विल थिंक कि हाँ, दिस इज गुड. And I'm not stereotyping anybody, it's just how my family operates. Sometimes we do that, कि अगर ये ज़्यादा महँगा है तो ये ठीक होगा, कम महँगा है तो शायद इतना क्वालिटी नहीं है. So things don't work like that, I feel. There's a lot going wrong with Manchester United at the moment. Glazers have I think इसके पहले जो comment आया था, Glazers have backed the manager, they have spent the money. Glazers will not be responsible for who you sign ना. उनको बोलोगे इतना पैसा चाहिए प्लेयर के लिए, वो दे रहे हैं. अल्टीमेटली वुडवर्ड का था, जो भी अभी रैंगनिक होने वाला है बाद में. सी रैंगनिक भाई लास्ट 10 साल में 2 ईयर ही वाज द मैनेजर of any club. He's managed 2 years in the last 10 years and you made him the manager, bro. Like, there's so much wrong happening at the moment over there. Jesse Lingard is going to leave on a free. Paul Pogba is going to leave on a free. They've signed a 36, 37-year-old Ronaldo. I mean, Cavani they signed, who's been injured perpetually. Like, who was that striker they said Falcao recently? Like 2-3 साल पहले जब भी बहुत सारा है यार. डिमारिया. Richard Di Maria is still playing really well at PSG. Like my point, like Falcao, I'm saying like खत्म हो रहा था, Cavani खत्म हो रहा था. Like it's like you said, personalities and people. Like I don't know what's happening with United, but I mean, don't get me wrong, I'm happy that that's happening in a way, because I जैसे हमारे बचपन में ही तूने बोला what we've been through because of Manchester United, the stuff that we've heard and been through because of our very good friends are Manchester United supporters. But yeah, let's see what happens with them. But we should beat them, man, at Anfield, because I will not be happy if they are the team that takes points of us and it dents a title race. Yeah, that will be the worst thing. You know what will be the worst? Even worse than United is Villa. if we draw or lose to Aston Villa. Steven Gerrard taking points off us. Oh my God, that is stuff of nightmares. Honestly, Hey, I that mean, is I okay. That is still okay. But Man United नहीं team नहीं के नहीं, अंदर कौन how सा is that okay? How that do is not you okay. know, Nitika? हम लोग, oh God, what we will go through. Do you know what we but will go but through? do you think कि अब जिस तरीके से Man United has been playing, you think that it would be okay if we lose or even give them 1 point right now? I don't think that that is okay. It's not. But where's Man United on the table? Where's Villa on the table? तू सिर्फ वो ले लेना फिर. तू लॉजिक लगा रही है, करेक्ट? तो लॉजिक में तू देख, मैन यूनाइटेड battling for top 4. Villa are in the second half of the table. That aside, Yeah, Everton. arguably our Everton. best player in the history of the club takes points off us and we don't win the league.
भाई मतलब इट्स गोना बी नस काटने हम वाला लोग सीन। फुलहम से हारे थे, हम लोग फुलहम से हारे हैं, हम लोग बर्नली से हार जाते हैं, हम लोग मगर ब्राइटन से ड्रॉ कर लेते हैं, बट बट वो कम क्या ऑन वी वो सीजन मगर क्या नितिका, था? वो सीजन में हम लोग टाइटल रेस में नहीं थे ना। वहां तो मतलब हम तो टॉप फोर की बात चल रही थी और लग रहा था ब्राइटन टॉप से फोर भी ड्रॉ नहीं इस होगा। बार किया है हमने, ब्राइटन से ड्रॉ इस हाँ। बार किया विद 2 गोल लीड वी हैड। दैट्स अ वन ऑफ। बाय द दैट्स अ वे, वन ऑफ, बट तुम या जो लास्ट सीजन में बता रही है हमारा फेबिनो हेंडरसन सेंटर बैक खेल रहे थे यार, वो अलग बात है। वो वी कैन नॉट, बट बाय द कैन वे यू अगर इमेजिन, बट डू यू नो व्हाट वी विल गो थ्रू व्हेन स्टीवन जेरार्ड सेलिब्रेट्स अगेंस्ट अस इफ ही हाइपोथेटिकली डज? एग्जैक्टली, तेरा रिएक्शन टेल्स अस ऑल। एग्जैक्टली माय पॉइंट। by the way, someone was asking about Everton का point deduction. I don't know if there is any news about, sorry, beer bubs. Uh, I don't think there is any news about points deduction from Everton. Uh, but Everton have a tough run of fixtures ahead. Yeah, it's like their relegation suddenly seems like a real possibility, and it will be hilarious. I mean, um, it is going to be amazing. I mean, if Everton get relegated, it is going to be breaking news. Seriously. Yes, illicit. No, Manas does not live in the UK. You can stop putting that comment What? because I'm not able to see. Someone is asking. It's literally spamming. Manas, do you live in the UK? No, he Where? does not live in the UK. I can't see it, but anyway. Yeah, नहीं you can भाई, stop with that comment. I don't live Yeah. in I don't live in Uttarakhand, bro. I don't. Nitika, do you think Everton will get relegated या बच जाएंगे वो लोग? I think they can get relegated, there's a possibility. After what they did to Van Dijk, they should, I feel. But then, uh, what I think that अभी जैसे since डॉनी वैन डे बीक ले लिया, डेले अली ले लिया, फ्रैंक लैम्पार्ड ले लिया, वो तो 2 तीर एक तीर से 2 निशाने हो जाएँगे अगर मैं बोलूँ तो। बट देन आई थिंक दैट दे कैन गेट रेलीगेटेड, बट let's see if that happens or not. It's like, I'm not even caring about any other team right now. There's so much to focus on at Liverpool itself. But अगर हम एवर्टन का सोचे तो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है टू गेट रेलीगेटेड, बिकॉज बर्नली के पास भी गेम्स इन हैंड एंड ठीक है यार, रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। शॉन्टाइक कर लेता है जैसे तैसे करके, वो रूट वन फुटबॉल से कर लेगा, लेकिन देन न्यूकासल भी रिजल्ट्स ग्राइंड कर रहा है, सो एवर्टन के पास थोड़ा कम चांस है टू get through. So that's why, yeah, definitely there's a possibility they can get relegated this time. Guys, we'll end this in the next 5 odd minutes. Let's just talk about Liverpool for the next 5 minutes. Brighton away. Nidhi, uh, क्या लगता है Brighton away? Brighton last 3-4 games have not been playing well. It's a good time to play them. Uh, क्या लगता है? What should be a lineup? How should we go about it? ये हाँ, ये हमने वेस्ट हैम के साथ भी बोला था, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग वेल, बट लुक हाउ वेल दे स्टार्टेड प्लेइंग अगेंस्ट अस. By the way, Somendu says we are chopping and changing the forward line every match. Is it hampering coordination of the field? नहीं यार, I don't think that is the case. It was also because we players, our players were not fit. But yeah, coming back to Manas's question about, yeah, we have to go with a strong lineup against Brighton. I think Van Dijk has to play. If Konate is fit, he has to play. I think Konate should play that one. Trent and Robertson, Fabinho, um, Thiago, Henderson, Salah, Firmino, because Firmino will be fit now. Salah, Firmino, and I would play Diaz in this one because I think that Mane. I don't. I'm honestly, I'm not even against resting Salah for this one. Salah looks jaded. He looks tired. I don't mind if Salah is rested for this one. But again, knowing how important this is, how tricky it can be, I don't think Salah will get rested, honestly. So Ritika, yeah. what's your lineup going to be like for this one?
I think it's almost the same one. And I agree, Salah should be rested at least for one match. But then you remember अभी last match में West Ham के against ही कुछ 75th minute पे साला को बिठाया था and जोटा को लेके आए थे, and Salah was angry with that as well कि because come on, he has come there to prove himself, and we understand that the kind of motivation you need from yourself to play at that level. I understand that, but अगर मैच की बात करें, आई वुड गो विद कोनाटे एंड सिमिकस. आई थिंक यू मेंशन कोनाटे, सो दैट्स राइट. कोनाटे शुड स्टार्ट एंड आई विल गो फॉर सिमिकस ऑन द लेफ्ट एज वेल. तो Why? मुझे लगता है कि शायद रॉबर्टसन को, सी रॉबर्टसन एंड सिमिकस में कोई, मेरे को वो एकदम सेम प्लेयर्स लगते हैं, बट स्टिल सिमिकस का आई फील दैट हिज सेट पीस डिलीवरी इज वेरी गुड, and also the crosses that he provides, in the middle of the park, I think that's very very good. There was this one cross, one pass that yesterday and Robertson provided. You remember that one? जो कि दो हमारे प्लेयर्स थे राइट से आ रहे, एंड उस तब तक नहीं पहुंचा उनको, बट डिफेंडर को हिट करके चला गया. मतलब दैट्स समथिंग दैट शुड हैव बीन डिलीवर्ड इन अ मैच लाइक दिस, एंड दैट इज द लेवल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम रॉबर्टसन. He is such a good player. I'm not taking anything away from him, but Simicus is a good player as well. So if we can't start him in this match, then when will we, rely on him? It's a Brighton game. तो कल अगर मैन सिटी के साथ हुआ तो obviously we are going to go with Robertson. पर अगर ब्राइटन के साथ भी अगर रिलाई नहीं कर पाएंगे सिमिकस पे एंड ही वोंट गेट दैट गेम टाइम, तो who will? तो फिर बेंच का क्वालिटी एंड प्लेइंग 11, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा. So I think that we need to give the chance whenever needed. Okay. And midfield में आगे? मिडफील्ड में आई अग्री दैट हेंडरसन, थियागो एंड फबीनो हैव टू स्टार्ट, बिकॉज हमको एक्सप्लॉइट ही उन्होंने वहां किया था पिछली बार. आई रिमेम्बर जिस तरीके से हम हाई लाइन खेल रहे थे और वहां से वो वर्टिकल बॉल आया, दैट्स द एग्जैक्ट थिंग दैट वी आर मोस्ट fearful ऑफ. वो हाई लाइन वाली चीज में जो हो जाता है, एंड दे डिड इट परफेक्टली इन दैट सेकेंड हाफ. दो गोल्स हम लीड कर रहे थे उनको, एंड पता नहीं किस तरीके से उन्होंने वो दो गोल्स निकाले. एंड वो हर्टिंग थिंग वाज दैट ललाना, he was involved in the game, in the goal as well. तो लग रहा था भाई नहीं मत कर यार कि मतलब तू मत हो इन्वॉल्व वैसे. बट आई एम हैप्पी फॉर द गाय, ब्राइटन भी अच्छा कर रहा है, बट स्टिल. और ऊपर से बहुत पेस है टीम में, पता, बहुत पेस है. तो भी या तो हम हेंडो को शुरू करवा के थोड़ा गेम में मोमेंटम रख के, अगर दो गोल का लीड, एक गोल का लीड बना के रखते हैं, फिर शायद शिफ्ट करके वी कैन चेंज समथिंग अप. बट देखो लैम्प्टी की बात हो रहा था, है ना. देन एक एक अगर प्रॉपर टीम का बात करें, बहुत यंग स्क्वाड है एंड बहुत ज्यादा पेस है उनमें यार, तो यू कांट जस्ट टेक देम लाइटली. दैट्स व्हाई आई थिंक दैट माटिप से ज्यादा कोनाटे को स्टार्ट करना चाहिए. वैन डाइक इज लाइक फॉरएवर देयर. ट्रेंट का तो है भी नहीं कहीं वहां पे. ट्रेंट को तो शुरू करना ही पड़ेगा. सिमिकस को हम शुरू करवा सकते हैं. रॉबर्टसन हैज पेस एज वेल, बट सिमिकस आई थिंक कैन डू द डिफेंसिव ड्यूटीज एज वेल. तो आई थिंक दिस शुड बी द टीम फॉर मी. लेकिन सेकंड हाफ में डेफिनेटली हमको मिडफील्ड में चेंज करना पड़ेगा. And up front? अपफ्रंट इट्स गोइंग, देखो साला तो बैठने नहीं वाला है. साला इज गोइंग टू बी देयर, इवन दो वी वांट साला एक गेम के लिए रेस्ट कर ले, बट नहीं होगा. तो साला इज गोइंग टू बी देयर. आई थिंक दैट लुइस डियाज से हम शुरू करवा सकते हैं. तो पीपल वर हाँ. मेंशनिंग कि लुइस डियाज को इसलिए नहीं खिला रहे थे हम गेम में, बिकॉज मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था अपने वीडियो में कि लुइस डियाज को शायद खिलाना चाहिए था, बिकॉज जैसे ही वो 83rd 84th मिनट पे आया, दैट चेंज वाज क्लियरली विजिबल इन द गेम, एंड आई थिंक दैट वी कुड हैव कंट्रोल द गेम बेटर विद लुइस डियाज. बट दे सेड दैट लुइस डियाज को रेस्ट दे रहे थे. तो अगर लुइस डियाज को रेस्ट दे रहे थे, तो आई डोंट थिंक कि कुछ बनता है. आई थिंक माने को रेस्ट देना बनता है, डियाज को रेस्ट देना तो अभी कहीं पे भी आई डोंट थिंक बनता है. तो डियाज को शुरू करवाना चाहिए हमको, शायद माने को एक गेम के लिए रेस्ट करवाए हम. एंड जोटा हैज टू कम बैक यार. जोटा हैड अ वेरी बैड गेम यस्टरडे. आई नो वो इंजरी के बाद Yeah. आया और हमने से शुरू करवाया उसको, बट आई थिंक दैट वाज द काइंड ऑफ गेम दैट आई डोंट रियली एक्सपेक्ट जोटा शुड हैव एनी मोर. So if he needs more game time to come back to that level, and we need him in that level because we have very important games ahead, so he should get the game time to reach that level, because he had a very very terrible game yesterday. I didn't expect that from him. So it should be Salah, Luis Diaz and Jota in the middle. Firmino अगर ठीक होता है, हम शायद सेकंड हाफ या फिर वही 75th मिनट वाला सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बट नॉट बिफोर दैट. Fair, fair. That's a break. I would go for, of course, Allison, Trent, Matip, Van Dijk, Robo. I would go for
Fabinho, Henderson, Elliott. I want Elliott to play this game, and I would go for the original front three. I will play Firmino, I would play Mane, and I would play Salah. Uh, एक 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 बात तो मैं समझ सकता हूँ, लाइक यू से किसी को मिनट्स देना है, किसी को नहीं देना है, फॉर्म वॉर्म, एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज समथिंग वी ऑल विल डिबेट थ्रू आउट द सीजन, बट आई जेन्युइनली फील कि अपना बेस्ट फ्रंट थ्री यही है, एंड अगर फर्मिनो फिट है, ही हैज टू स्टार्ट, ही शुड स्टार्ट, एंड माने लास्ट गोल लिवरपूल के लिए सादियो माने ने मारा है वेस्ट हैम के अगेंस्ट, सो ही हैज टू स्टार्ट. मो साला हैज टू स्टार्ट, लाइक नितिका वाज सेइंग दैट उसको बैठाने का अभी मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है. एंड आई वुड बी फर्मिनो, एंड लेट्स जस्ट हैव अ गो एट इट मैन, लाइक मजा आएगा यार. मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन नाउ. निधि ने बोला हाइपोथेटिकली 19 more games to go man, 18-19 more games to go for the quadruple. If it happens तो absolutely मजा आएगा. Nidhi, before we end it, I know you don't do predictions. From now, you and Nitika, dono go. Who is going to be the most important player for us till the end of the season? And then we sign off. Nitika, do you want to go for it first? I think Nidhi, you should go first. I want to think on this and answer then. I'm going to Uh, answer first. I think from now till the end of the season, the most important player for us is going to be Roberto Firmino. That's my answer. Mohamed Salah. Mohamed Salah. He is going to try and convince FSG to give him a new deal. He is trying and convince everybody what he's worth, even when he's about to turn 30. So I think it is going to be Mohamed Salah. As cliched as that answer is. My answer is going to be Trent Alexander-Arnold. I think he's going to be the one that is going to have like is going to be the game changer for us because he is the creative playmaker for us. उसका कोई हमारे पास रिप्लेसमेंट है नहीं. अभी किसी को भी लेके आओगे क्वालिटी ड्रॉप दिखेगा. जो गोमेज को लेके आएगा वो डिफेंड बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन वो क्रिएटिव पासेस नहीं कर पाएगा, वो क्रॉसेस नहीं दे पाएगा हमको, वो आगे मूव नहीं कर पाएगा जो ट्रेंड करता है. तो दिस वाज विजिबल, पीपल आर क्वेश्चनिंग ट्रेंड कि क्या करता है ट्रेंड. लेकिन जब जो गोमेज को लेके आए थे एज अ राइट बैक एंड देन थॉट नहीं नहीं भाई, वी अंडरस्टैंड व्हाट ट्रेंड डज, एंड आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम जो गोमेज, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी हर राइट बैक का कंपैरिजन ही ट्रेंड के साथ होने लग गया है. तो इसीलिए ना कॉनर ब्रैडली अच्छा लगता है ना निको विलियम्स अच्छा लगता है. बट यार एक ट्रेडिशनल राइट फुल बैक्स हैं वो लोग. ट्रेंट ने एक पोजीशन इवॉल्व कर दिया है, दैट्स समथिंग एल्स, बट आई थिंक दैट ट्रेंट इज गोइंग टू बी दैट प्लेयर फॉर मी दैट इज गोइंग टू डिफाइन द रेस्ट ऑफ द सीजन दैट वी हैव. It's great. It's actually great that we are thinking about three different players. Uh, Pep Guardiola is saying that first of all, naam bhi dekho na yaar. Keep Thiago fit and we're doing the quadruple. Like different Thiago and Keita. That's great. Like people have different players in mind. We've come with 4-5 players already. Van Dijk bhi hoga, Alisson bhi hoga logo ke list mein. So yeah, guys, this is it. This was the first edition of Beer Pe Baatcheet, and it was with Hendo, किसी ने Hendo Trent. Okay, निधि और क्या है? कोई कुछ outlandish है क्या? Like James Miller किसी ने लिखा है क्या? Hendo and Thiago. Okay, निधि आपकी favorite player क्या 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 था निधि उसके पहले? सादियो माने ने कुछ बोला है तेरे लिए, तेरे हाँ, तेरे भी वो ज्यादा सीरियसली ले लिया उसने अपने आप को सादियो माने. Anyway, guys, so this was it. This was the first edition of Beer by Baatcheet. Nitika, thank you so much for joining us. Nitika, हमने आपके चैनल को काफी hype up किया. You've reached 10K followers. Do you want to say anything about Menace in the Monk, and then we'll sign off? We're going to put you on the spot once again. I'll tell you something. Okay, guys, I'll tell you something. If there is one channel that I feel I don't even have to prepare for anything, that's Menace and the Monk. Because that's Liverpool. That's pure Liverpool. होता है ना कहीं से vibe आती है, तो तुम दोनों से वो Liverpool वाली vibe आती है. So it feels so positive to be here. It's like, Manas, you just texted me an hour back, कि, can you be available? And I'm like,
I might try, but I will be. I'll try my best because it's just so much fun to talk about Liverpool too with both of you. So that's why I feel that this is that my go-to channel as well whenever it comes to Liverpool. तो कोई भी reaction होता है, निधि का भी reaction आया था आज match के बाद. So it's so much fun to see that कि क्या हम reaction share करते हैं after the match and also. So guys, don't forget to subscribe to Menace and the Monk because these guys are so sweet and provide such good content. So don't forget to subscribe to them and like this video, share their content. That'll mean a lot to us all. थैंक यू सो मच नितिका, इतना प्यार से सादियो माने ने भी बोल दिया है अभी तो, मतलब ये जो भी बंदा या बंदी है सादियो माने भाई, ये मैं अलग ट्रिप में जा रहा हूँ निधि। Perfect. यू वांट टू लाइक एंड दिस नाउ? Yeah. No, but yes, you guys have said it all. By the way, just to conclude, I'd like to say that if you've not subscribed to IndieCop, please do. She's just hit 10,000 subscribers. I am really proud of her because, she, I think, is the first Desi Liverpool YouTube channel to hit that mark. So that's amazing, right? So please do, and if you like our content, please make sure that you subscribe to us as well. But yeah, man, I mean, thank you so much for joining in. This was a very long one. This was by far the longest live that we've done, 1.5 hours जोधा straight. अकबर वाला, जोधा अकबर Yeah. एडिशन था bro, ये तो Thank you मतलब। so much, Nitika. Thank you so much for being on with us for the entire length of this. But yeah, I mean, keep watching, guys. This is Menace and the Monk. Beer pe Baatcheet. We're going to make this a regular thing. We're going to talk about things much more than just Liverpool on this one. एक But बात yeah, तो पक्की है निधि, हम लोग मोटे होने वाले हैं, हाँ मोट हाँ भी वो तो पक्का 100%. But मतलब yes, yeah, thank you so much for joining in, yeah. I mean, let's hope everybody stays safe and everybody does well. That is more than important. Please stay safe and please take care of yourself. Cheers, good night, and up the Reds. कम ऑन रियल मैड्रिड टुनाइट, Yeah, Real Madrid, come on tonight. हाला मैड्रिड।